Honorable Defense Minister Rajnath Singh ji. In the introduction, he said about the policy of the present government, especially under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji and also Rajnath Singh ji. How they are strengthening our army and modernizing. At the same time, what are the reforms required? In that respect only, he has brought in the Inter-Services Organization Command, Control and Discipline Bill 2023, 6, empowerment of Commander-in-Chief and Officer-in Command of the Inter-Service Organization with all disciplinary and administrative powers in respect of personnel servicing in or attached to the such organization. This is a very important thing he has brought in. First of all, madam, when we are discussing about the Defense Department, security also is what we are discussing. So our Indian security, not only the army is also strengthening, I'd say border security also more important. For example, if you take Tamil Nadu, there are Kachethi issues there. As our already member, one honorable colleague said, when marine security is at the point, when the fisherman is going, how the navies are protecting, and also other navy, that Sri Lanka navy, how they are treating our fishermen. In that, because of Kachethi is part of our Indian territory, still it is under control of Sri Lanka. Because at that time, IndiraGandhi period, she unceremoniously, it is given to the Sri Lanka. But it is not passed and approved by the parliament. Any territory, if you are giving to any other country, it has to be approved by parliament. Still, it is not yet approved. In this regard, our honorable former Chief Minister, Madam Jayalalitha ji, went to the Supreme Court and put a case that this Kachethi is the part of our Indian territory, which because of that, Navy can also use that area and save our Tamil Nadu fishermen. That kind of way to secure give the protection, and not only the country and our fishermen community, Tamil Nadu fishermen, the defense minister has come forward to see that somehow the Kachethi is still once again to come to our thing. That has to be done. We are requesting that. For a long time, they are demanding this issue. This is very, very important to solve the Tamil Nadu fishermen issue. And also Tamil Nadu fishermen, they are taking with the Sri Lankan Navy. They are shooting our fishermen. They are our Navy. I don't know what they are doing. Sometimes they are risking that they are not giving. But instead of that, all Tamil Nadu fishermen is taken to put in the prison of Sri Lanka. And we are going requesting our Prime Minister to release them. But after taking NDA government, we have seen that our Honorable Prime Minister took a lot of steps to free our fishermen from Sri Lanka. We are appreciating that. We are not denying that. At the same time, for security reasons, especially defense reasons, not only you are bringing so many reforms, appreciate that. And disciplinary thing is very, very important. At the same time, defense area also important for the country. In that respect, I request Honorable our Defense Minister to see the Tamil Nadu demand for a long time to bring that once again the Kachethi part of our Indian territory. That is my request. In that respect, I am supporting this bill. Thank you very much. Thank you. Honorable Sri Chanakyaa Mandala Ravindra Kumar. Thank you, Madam, for giving this opportunity. The Inter-Service Organization Command, Control and Discipline Bill 2023, the government intended to bring the officers belonging to various service of defense establishment, that is Air Force, Navy and Army, but who are serving in an inter-service organization under Commander-in-Chief of the, or the Commander, Officer-in-Commander under a single act, so that while serving under a Commander-in-Chief or the Officer-in-Command, any disciplinary issues that can be dealt accordingly without referring the matter to the respective services for taking appropriate action under relevant act, that is Air Force Act 1950, Army Act 1950 or Navy Act 1957. This bill is basically enabling legislation which empowers the
heads of the inter-service organizations to service effective command, control, and discipline on all personnel of regular Air Force, Army, and Navy, and to persons of other forces as notified by the central government who are serving in or attached in inter-service organization without amending the respective acts. Sir, over the period of time, military operations become more complex and interdependent because the global security landscape has evolved in such a manner. The emergence of symmetric threats, cyber warfare, and the need for joint operations demanded greater coordination, communication, and seamless integration among the different branches of armed forces. The Inter-Service Organization Command, Control, and Discipline Bill 2023 is essential under these circumstances. What happened during the Mumbai terror attack, everybody knows, due to this systematic coordination between various security forces, the threat was handled in such a coordinated manner that the perpetrators were forced to run for shelter and they took shelter in neighboring countries. This bill acknowledged the requirement for a unified approach to command, control, and discipline within the armed forces by establishing a precise and uniform mechanism across all ISOs. By granting commander-in-chief and officer in command of ISO authority to exercise disciplinary and administrative powers, regardless of the specific services of personnel belonging to, the bill fosters a sense of unity and collective responsibility. This bill would have direct impact on command, control, and discipline of inter-service organizations like Andaman and Nicobar Command or Defense Space Agency and joint training establishment like National Defense Academy or National Defense College, as the commander-in-chief or officer in command of such inter-service organizations are not empowered to exercise disciplinary or administrative powers over the personnel belonging to other services. In view of this, this bill is very much needed. I congratulate the Honorable Defense Minister. In view of this, I welcome and support the bill. Thank you, Chair. Shri Sujit Kumar, he wants to make. Thank you for allowing me another 30 seconds, though I have already spoken on this bill. Sir, मैं दो बातों के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं. Sir, the entire nation knows about the aggression of China in the Indo-Tibet border. The Indo-Tibet border, sir, not India-China border. Sir, लेकिन सर पहली बार 1962 के बाद हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए चाइना को और आंख से आंख मिला के आज चाइना के साथ हम लोग खड़े. So this definitely deserves compliments and commendation on behalf of the House to the Honorable Defense Minister. और सर दूसरी बात, sir, I would like to salute the work of Border Roads Organization (BRO). Sir, I have interest in strategic issues and I have been to Pangong Lake, DBO Daulatabad Oldie, and Bumla Pass near Tawang in Arunachal. Sir, the kind of roads we have today in our border areas is, sir, to be seen, to be believed. 10 साल पहले सर हम लोग बहुत पीछे थे चाइना के सर इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने. आज सर really the BRO has done such a stupendous and stellar work. For this also I would like to commend Honorable Defense Minister. Honorable members, I happen to be from Sainik School, Chittorgarh, and I keep on meeting several 3-star generals, admirals. There is upbeat mood. The Honorable Raksha Mantri's contribution is so impactful, so massive, making the nation proud. And I'm so glad you took time again and reflected on this. Shri Chanakyaa Prasad. थैंक यू सर, मेरे को बोलने का अवसर दिया. मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर बोल रहा हूं और मैं इस सपोर्ट में खड़ा हूं. मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं. क्या ये जो इंटर डिसिप्लिनरी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड बिल लाया, इसके लिए वो बहुत दिन से सोच भी रहा था और अभी वास्तव में आ रहा है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टाइम पे ये हम लोग का जो सम्मान था, ये सम्मान पूरा वर्ल्ड में बढ़ा है. केवल पॉलिटिक्स में नहीं, पूरा ऑल साइड, स्क्वायर साइड में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर में ये बढ़ा है. और उसमें
ऑनरेबल राजनाथ जी का बहुत बड़ा एक रोल भी रखा है। सर, हम लोग जानते हैं कि आज टाइम का हिसाब से जैसे डिफेंस सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो सराहनीय है। और अभी हम लोग जानते हैं कि आज जैसे डिफेंसिव एक मूड में रहता है कंट्री, अभी एक ऑफेंसिव मूड में भी आया है और विभिन्न समय में इसको हम लोग देखने के लिए मिल रहा है। सीडीएस जो पोस्ट था, ये सीडीएस क्रिएट हुआ है। सीडीएस क्रिएट होने के बाद इंटरडिसिप्लिनरी सर्विस में भी तो एक आर्मी, नेवी एंड मिलिट्री में एक जो तालमेल है, ये तालमेल बहुत सुंदर हुआ है, हम लोग को देखने मिला है। और टाइम का हिसाब से थिएटर कमांड का भी जो थ्योरी अभी वास्तव में हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। सर, मैं डिफेंस कमेटी में रहते हुए देखा, डिफेंस सेक्टर में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया है ये किसी टाइम से सबसे ज्यादा है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो थ्योरी है, ये आत्मनिर्भर भारत थ्योरी को वास्तव में रूपायित करते हुए मिसाइल हो या बंदूकें हो या तोपे हो, इसमें जो चेंजेस लाया है और तीनों सर्विस में, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में जो तालमेल, आपसी तालमेल है, इसको जितने बढ़ाने का काम किया है, मैं रक्षा मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और देख रहा हूँ क्या तीनों सेना, तीनों फोर्सेस में एक अच्छा सा तालमेल होने के बाद ये ऑफेंसिव से डिफेंसिव से ऑफेंसिव, जैसे रक्षा मंत्री जी विभिन्न मीटिंग में सेमिनार में भी बोलते हैं, इसमें बोला है, इसको वास्तव में कार्यान्वित हुआ है। और अभी जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन आया है, इसमें खाली डिसिप्लिन का मैं जितना दिन हम लोग देखा है, ये तो डिसिप्लिन है, फिर भी इसमें इंटर सर्विस में इनका जो तालमेल है, इसको रखने के लिए जो बिल का प्रावधान क्या है, ये मैं चाहता हूँ तीनों बिल से थोड़ा अलग तो नहीं है, लेकिन तीनों बिल को समाहित करके ये लाया है। और कमांड में जो आर्मी कमांड है, आर्मी कमांड का आर्मी का ऊपर में भरोसा और ज्यादा बढ़े, इसका भी व्यवस्था किया है। ऐसे उनका रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने पूरा बोल ही दिया है। मैं चाहता हूँ क्या इन फ्यूचर जैसे आत्मनिर्भर भारत क्या है, डिफेंस में हो या एयरफोर्स में हो या मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में जो किया है ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अब भारत का भी जो सामान वह इंडिया में ही बन रहा है। जो अलग है, जो नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था वो डिफेंस मिनिस्टर ने लाया। और यंग ऑफिसर्स के बीच में इनका जो कॉन्फिडेंस है मैं देख रहा हूँ। और चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल बढ़ाने का भी व्यवस्था किया है। ये स्कूलिंग टाइम से सैनिक स्कूल का जो चिंतन है और इसका स्टेज में और ज्यादा बढ़ाने का जो व्यवस्था किया है, मैं रक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। क्या फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज आदमी को इसमें इसका ऊपर में भरोसा भी होगा। और जो अभी विभिन्न हम लोग का स्टेट्स में हो या में जो फोकस कर रहे हैं आर्मी का ऊपर में, ये भी अच्छा है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा बिल में इसका विस्तृत विवरण है, इसलिए मैं बिल पे नहीं जा रहा हूँ। इसका थीम में स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस, और इसमें रक्षा मंत्री जी ने बोला है। सर, ये बात है क्या आर्मी का मन में जो आर्मी का फोर्स का ऊपर में जो भरोसा था वो भरोसा बढ़ा है। और इंटर सर्विस इसमें इनका इंटर सर्विस तीनों फोर्स में जैसा इनका मानसिकता है, इसको चेंज हो जाएगा और फ्यूचर में एक सबसे बड़ा, सबसे विश्व गुरु जैसे बोल रहे, सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स में रूपांतर होगा, विश्वास रखता हूँ। थैंक यू। Shri Rajnath Singh to reply the discussion. आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री सुजीत कुमार जी का, अयोध्या रामाराव जी रेड्डी का और श्री अशोक जी वाजपेयी का, जी के वासन जी का, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बीपी वत्स का और डॉक्टर वीके साई रेड्डी जी और एम थम्बेदुरई जी और कामाख्या प्रसाद जी का। इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस बिल का यहाँ समर्थन किया है, वहीं पर जो कुछ भी सुझाव आवश्यक थे वह सुझाव भी उन्होंने दिया है। मैं अपनी बात रखने के पहले जो बातें सुजीत कुमार जी के द्वारा की गई हैं उस संबंध में कुछ बातें रखना चाहूंगा। थिएटराइजेशन के संबंध में इन्होंने हमारे विचार जानना चाहा। मैं समझता हूं कि थिएटराइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है और इस संबंध में अभी कुछ कहना या प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि थिएटराइजेशन होता है तो यह हमारा जो एक्ट है तो एक सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा, एक सामान्य अधिसूचना के द्वारा यह जो है हमारा जो थिएटर कमांड होगा उस पर भी यह प्रभावी होगा, यह मैं जानकारी देना चाहता हूं।
और हमारे रामा रेड्डी जी ने मैरीटाइम सिस्टम और एजेंसी के क्लोज कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने कही है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को सभापति महोदय आपके माध्यम से कि हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इस सदन को कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर प्रकार के वारफेयर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और यह तैयारी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हमारे रेड्डी साहब ने कुछ और बातें कही हैं। वह कही है उन्होंने जनरली सपोर्टेड लो डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा है और वैकेंसीज इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में कहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं सभापति महोदय और फिर से मैं अपनी बात को यहां पर दोहराना भी चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और जहां पर बल्कि मैं कहना चाहता हूं जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उसके अंतर्गत हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्हीं संसाधनों के अंतर्गत ही हम लगातार काम कर रहे हैं। 3 to 4% ऑफ जीडीपी की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 to 4% ऑफ जीडीपी ही क्यों, आवश्यकता पड़ी तो 5%, 6% ऑफ जीडीपी भी इस देश की सिक्योरिटी के लिए और हमारी डिफेंस के लिए खर्च किया जा सकता है। वैकेंसीज को भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लगातार इस समय भर्ती चल रही है। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जहां तक सवाल है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के संबंध में भी एप्रोप्रिएट लेवल पर इस समय हमारे यहाँ काम हो रहा है। अभी तक यह स्ट्रेटजी बन नहीं पाई थी, एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए नहीं बन पाई थी, लेकिन उस पर फिलहाल काम चल रहा है। थम्बी दुरई जी ने कुछ चीजें जानना चाहा है। एक तो सपोर्ट किया है इन्होंने इस बिल का, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये उन्होंने एक तो फिशरमैन की बात उठाई है और आइलैंड हैंडेड ओवर टू श्रीलंका शुड बी ब्रॉट बैक की बात कही है और तमिलनाडु सिस्टम बीइंग स्टार्ट बाय श्रीलंकन नेवी या कुछ ऐसा कही है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यह मैं बतलाना चाहूंगा कि इंडियन नेवी भारतीय फिशरमैन की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है और हमारी फोर्स, हमारी नेवी उस दृष्टि से काम कर रही है। सभापति महोदय, जहां तक वारफेयर का प्रश्न है, वारफेयर का स्वरूप बदलता रहता है समय समय के अनुसार। अब क्योंकि वारफेयर अब कन्वेंशनल नहीं रह गया है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी व नेटवर्क सेंट्रिक यह होता जा रहा है। अतः यह आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बिल सदन में लाया गया है। तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद हमारी ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी ये जो ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से ये काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में, जब यह बिल स्टैंडिंग कमेटी जो रक्षा विभाग की है उसके समक्ष विचाराधीन था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव माना इस बिल को, अपने में इतना परफेक्ट माना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है और अपील की है दोनों सदनों से कि बिना किसी संशोधन के इसे सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया हो कि बिना किसी अमेंडमेंट के इसे पारित कर दिया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को कि बिना किसी अमेंडमेंट के वह इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर भी जो हमारे व्यू पॉइंट हैं उनको मैंने इस सदन के समक्ष रखा है। और आगे जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, जो भी, क्योंकि रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी
और सदैव हम करते रहेंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल के ऊपर व्यक्त किए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति भी मैं विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मुझे इस बिल के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 15 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Rajnath Singh to move that the bill be passed. आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Sri Dharmendra Pradhan to move a motion for consideration of the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Indian Institute of Management Act 2017 as passed by Lok Sabha on 4th August 2023, listed in today's revised list of business or serial number 7B to be taken into consideration. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Amar Patnaik, time allotted 8 minutes. Thank you, Chairman, sir. Sir, I would like to first of all, welcome the introduction of this bill. I think this was necessary, considering the fact that the original act of 2017 had basically tried to give academic autonomy to all the IIMs. The IIMs have been perceived to be institutes of preeminent importance in our country, national importance, and in fact, in some ways across the globe. They had very high rankings. Some of the IIMs featured in the top 50. The current bill which has been brought in essentially has two parts. One part is to give is to upgrade the National Institute of Industrial Engineering Mumbai into an Indian Institute of Management Mumbai. I support this particular upgradation. At the same time, I could probably recommend to the Honorable Minister, if instead of only looking at public sector institutes, if it is possible to also upgrade some other institutes of importance in states with private participation or joint state and central government participation, so that we would have more number of institutes in the country, and the management education ecosystem will spread across the country and will not get limited to only state capitals or in some cases important cities of the country. It is important that rural people of India, agro management, agroforestry management, these are issues which should be taken up by management institutes also, and not necessarily only business management. This is the interdisciplinarity that India can actually bring in, which the foreign institutes of management do not have. Now, the second part is basically consisting of 5 important amendments,
And these amendments, I will refer to one by one. The first one is relating to Section 10 of the Principal Act. The Section 10 of the Principal Act, it talks about the President of India shall be the visitor of every institute. This is an insertion which has been made, and I wholeheartedly support this, because I think all the Indian institutes of technology which have equal amount of stature in the global arena also have the president as the visitor. So I think this was necessary. While this particular bill, this particular insertion is welcome, I would also like to refer to the insertion of 10A2, subclause 2. The visitor may appoint one or more persons to review the work and progress of any institute and to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the visitor may require or may direct. Why this has come up? This has come up, Honorable Chair, because the existing situation in the Indian Institutes of Management after the 2017 Act, which gave them complete freedom, operational, financial, academic, all kinds of freedom, they did not really institutionalize the kind of protocols required to deserve that kind of autonomy. I will refer to one of their very celebrated ex-directors of IIM Ahmedabad, Dr. Bakul Dholakia. In an interview, he said, the IIM Act mandated an independent review of each institute every 3 years. I'm talking about the 2017 Act, which was to be conducted by eminent independent individuals who could objectively evaluate the institute's overall performance. The IIM Act specifies that the review report must be presented to the board, and after its approval should be placed in the public domain. The idea is that the board, the director would be responsible to the board, and the board would be responsible to the public, because after all, many of these IIMs are completely funded by the government. There has to be some amount of accountability. But he himself states, however, in last 6 years, only IIM Bangalore has conducted such a review. And therefore, I support the insertion of 10A2, which says that the president may appoint one or more persons to review the work in progress. However, I would like to add a word of caution here. The word of caution is, I think the review of work in progress should be in areas other than academic and research related matters, because I think there the interference should be minimum unless the person who is reviewing is also an expert in that particular domain. I believe that autonomy and accountability go hand in hand. If you want autonomy, you also have to be accountable, which was not happening, and therefore this bill is welcome. Inefficiency of the existing grievance redressal procedure and breakdown of the governance structure in the IIM resulted in this particular introduction of these amendments in the original 2017 Act. However, as I said, while under-regulation is bad, over-regulation, which might lead to interference, is worse, far worse. So I think we have to be careful about this. The history has, however, revealed, and this is what Dr. Dholakia says, that government intervention in the IIM affairs has been very minimal. And this is really welcome. I hope this particular trend will continue despite the new introduction of a visitor and a committee to look after the affairs in terms of reviewing their performance from time to time. Then I'll come to the next section, section 16 of the Principal Act, which has been amended at subsection 3. It says that the director shall be appointed out of a panel of names recommended by a search cum selection committee to be constituted by the board consisting of XYZ. Now, the point here is what has happened was that such a procedure already existed, but there was completely, it's a kind of inbreeding that was happening. There was nobody from outside. Now the president will be able to appoint somebody into the search and selection committee, which is welcome. I could again give a suggestion to the honorable minister here, since he is present here, that this process should not, however, be longer than the previous system. Would it be possible that the existing board, some of the members could be designated who will act as the search and selection committee, recommend a panel of names to the government of India, to the president, who will do the selection, in which case the process may become faster.
The next point is relating to the committee of certain experts believe that the IIMs are public institutions answerable to the people of India, and the bill will ensure they do not turn into private fiefdoms, which is what I explained just now. But there is also a belief that will there be unnecessary interference? The bill, however, precludes this possibility by ensuring that the president is at the helm of affairs while directing any kind of inquiry. Earlier, the inquiry is being ordered by the board itself into its affairs, which was there was definitely a conflict of interest. So I think the amendments are more or less in order. Only thing I would now hope that in 2009-10, IIM Ahmedabad ranked 11th in the Financial Times rankings for the one-year program and 41st in the economic rankings for the second two-year programs. However, its current rankings have declined to 51 in FT rankings, from 11 to 51, and 41 has become 99 in economics rankings. With these changes and with kind of an affirmative intervention into the scheme of things, and with under the direction of Honorable Minister, I am sure the rankings will improve and the ecosystem will improve. However, it is extremely important that the management education should spread across the country. People who are probably not able to learn in English and learn in local languages, some kind of mechanism could be held in which the IIMs could handhold some of these institutes at the state level and give them the courseware in local language, in which case the educational knowledge would spread, the management educational knowledge would spread, and this is required for all disciplines and not necessarily in business management. With these, I support the bill, commend the minister and commend the government for bringing in these changes. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, 1961 में ये महसूस किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था और डेवलपमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संचालन किया जाए, जिसमें देश के बेहतर स्टूडेंट पढ़ें और देश की आर्थिक प्रगति करें। और उसी क्रम में दो इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शुरू किए गए, एक अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। बाद में 4 इंस्टीट्यूट और बढ़ाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड। इस प्रकार 4 इंस्टीट्यूट और बढ़े और कुल मिला के 6 इंस्टीट्यूट बनाए गए। माननीय मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद, जहां पिछले 70 वर्षों में लगभग 6 इंस्टीट्यूट थे, माननीय मोदी जी के आने के बाद 7 इंस्टीट्यूट बढ़ाए गए और इस प्रकार इन इंस्टीट्यूट्स की संख्या 13 हुई। आप समझ सकते हैं कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है, उस पर कितना तेजी से काम कर रहा है, और उनके इस सहयोग में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें एक और इंस्टीट्यूट का इजाफा करने जा रहे हैं। महोदय, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई एक बहुत अच्छी संस्थान है और इसने देश के टेक्नो मैनेजरल स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि की है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ होने के बावजूद, चूंकि नेशनल इम्पोर्टेंस का इसको दर्जा नहीं प्राप्त था, तो ये अपनी डिग्री नहीं दे पाते थे। उससे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में और इंस्टीट्यूट के छात्रों में थोड़ा सा एक मन में रहता था कि इतना सब होने के बावजूद हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए इस बिल के माध्यम से उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करेगा। आज जब भारत में माननीय महोदय देश की अर्थव्यवस्था को हमको
तीसरे स्थान पर लेके जाना है, तो हमें आवश्यकता है कि देश में अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हों और उनके छात्रों के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को गति दें। और आज न केवल ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे मैनेजरियल स्किल के साथ देश के अच्छे नागरिक और अच्छे मैनेजर बना रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में काम बढ़ाने में काम कर रहे हैं। महोदय, इस इंस्टीट्यूट में 22-23 के लिए 65 करोड़ रुपए इसको बजट दिया गया था। बाद में इसमें 80 करोड़ रुपए इस बिल के माध्यम से इसको और दिया जा रहा है और ये केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है। अन्य वर्षों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जहां इतने अच्छे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं मैनेजमेंट के, इनको हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी अलाउ करें। ये एक मेरा सुझाव है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहे हैं और उन इंस्टीट्यूट को डिज़ाइन के माध्यम से, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के माध्यम से उनकी बहुत सारी आय भी होती है। हमारे जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट के, अगर ये जो सिक इंडस्ट्रीज हैं या जिन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उनकी अगर मैनेजमेंट सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए। महोदय, आज ये भी आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को वर्ल्ड क्लास और पूरी दुनिया में स्थापित करें। उसके लिए भी दुबे जी, ये गलत परंपरा है। दुबे जी, माननीय सदस्य, जब माननीय सदस्य बोल रहे हो और उनके राशन के बीच में नहीं आना चाहिए। आप विराज पीछे बैठ जाए। धन्यवाद। कहीं बैठ जाओ। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस चीज के लिए माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो एक और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। आज दुनिया भर में जितने भी बड़े संस्थान हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं वो भारत के हैं। भारत में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज भारत का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। महोदय, इस बिल के माध्यम से जो हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इस बिल में ही उसमें ये प्रोविजन है, जो हमारा सेक्शन 10A था उसको 10A से रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है और इसमें जो विजिटर है उसमें बोर्ड के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें जो अपॉइंटमेंट का भी तरीका है वो भी पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी पूरे देश भर में ये देखेगी कि कौन कौन अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिल सकते हैं, अच्छे मैनेजमेंट के प्रोफेसर मिल सकते हैं, उनका नाम सर्च करके भेजा जाएगा और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम इस इंस्टीट्यूट में बनाएंगे डायरेक्टर के रूप में, फैकल्टी के रूप में। अब इस बिल के माध्यम के बाद इस संस्था को अपनी डिग्री अलॉट करने का, डिग्री ग्रांट करने का मौका मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से ये एक बेहतर कदम होगा। माननीय महोदय, आज जैसा कि मेरे मित्र अमर पटनायक जी ने भी बताया कि ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार उनकी मीटिंग करें, उनकी समस्याओं पर विचार करें और जो भी इसके लिए हो सकता है। आज आवश्यक है कि हम हिंदुस्तान में अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें। आज माननीय मोदी जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भारत आने का एक मौका प्रदान किया है, लेकिन उसमें होगा ये, अधिकांश इंस्टीट्यूट या अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इनिशियल लेवल पे भारत के जो अच्छे संस्थान हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। अपना संस्थान बनाने में उन्हें समय लगेगा। तो हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग अगर बढ़ेगी तो ये न केवल भारत का नाम रोशन करेंगे, यहाँ के पढ़े जो लोग हैं वो भारत का विदेशों में भी प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इसका फायदा होगा। और जो यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में आएंगी उन यूनिवर्सिटीज को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा। और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट
जो हैं ड्यूअल डिग्री देते हैं, जिसमें स्टूडेंट कुछ समय यहाँ पढ़ते हैं, कुछ समय विदेश पढ़ते हैं। तो उस तरह के स्टूडेंट्स का जो बेटर एक्सपोजर होता है वो भी एक चल रहा है। जब यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में आएंगी तो उसका इसमें और फायदा होगा। मैं माननीय महोदय और माननीय मंत्री जी का इस एक बेहतर बिल के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर नील कुमार सर। माननीय मस्तान राव बीडा। Mike. It's on. The Indian Institutes of Management, IIMs, are management, education, and research institutes in India. They primarily provide postgraduate, doctorate, and executive education programs, as well as certain other courses. Following the enactment of the Indian Institutes Management Act in 2017, the IIMs were designated as institutes of national importance. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 comes 6 years after the IIM Act of 2017. The amendment upgrades the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, to the Indian Institute of Management, IIM, including it in the IIM network. NITIE has encountered several hurdles as a result of its absence from any act of parliament. With this amendment, there shall be further seats available for management aspirant, which is positive message for them. Honorable President of India is designated as the visitor of each institute under the amendment. The presence of the visitor shall give further strength to the system and also a centralized system of designating persons to examine an institute's work, undertaking investigations into its operations, and take necessary action depending on the results. However, there are certain pressing issues regarding the bill which I would like to highlight. As per section 10(2)(a) of the amendment, the President of India would be appointed as the visitor of all IIMs. The visitor is also endowed with the power to appoint one or two persons to assess the working and functioning of IIMs and provide a report on the same. Can the minister please state the reasons and the need for appointing a visitor to IIMs, given it directly leads to curtailing of autonomy of such institutes? Can the Honorable Minister also be state as to why the visitor's prior approval is required in appointing or nominating people for the said positions? Why has the autonomy of the IIMs being taken away? We should look at the top B schools and how they function to ensure that out IIMs are able to compete at the global stage. Institutions such as Harvard, Cambridge, Oxford, or Berkeley are being partially or sometimes fully funded by the government depending on the course. Yet they exercise a greater degree of autonomy. Management is a course that needs specialist and institutional freedom. On the first reading, it looks like that the bill is taking back what the 2017 amendment had given to them. The bill makes no mention of the exorbitantly high fees charged by the premier institutes. The quality of education offered by the IIMs remains unmatched, but it's still a dream for students from low-income households to get enrolled in such courses. The IIM MBA fees for top IIMs such as IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, and IIM Calcutta are the highest, ranging from 20 to 25 lakhs. While there are provisions for scholarship offered by the governments and different IIMs, many students don't have the right guidance and coaching facilities in order to land on the merit list. Can the Honorable Minister clarify if any provisions would be made regarding fees waivers for financially weaker strata of the society? If the ministry plans on the initiating coaching facilities aimed at preparing students for CATs from the weaker sections of the society.
The provisions of IIM Act of 2017 enabled the board to launch an investigation into institute if it failed to operate in compliance with the act. Such investigations were to be carried out by a retired High Court judge. However, the bill repeals all these provisions and provisions and proposes a new inquiry mechanism. It grants the visitor the ability to inquire. Can the minister state the reasons for doing away with the section 17 of the act? Can the minister also be pleased to explain the plan of action undertaken by the visitor while investigating such cases? Also, as per the institutional position, the presence of visitor equates to the presence of the education ministry in the process. How does the presence of government in such process benefit the IIMs or its 1 minute, sir? While the move to include NITIE Mumbai under the ambit of IIMS has been widely appreciated, a few sections of bill tend to undermine the functioning of IIMs, thereby having a negative impact on their performances. I sincerely urge the Honorable Minister of Education to address the concerns raised above and provide explanation for them. With this, I support the bill on behalf of YSR Congress Party and our Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you for माननीय being here. मस्तान राव जी, माननीय श्री जी.के. वासन जी। Sir, I congratulate the minister, sir, for bringing this bill at an appropriate time. IIMs are proof that the Indian education system is par with the top business schools around the world, sir. But still, sir, we understand our ranking has to be improved, and I'm sure this particular bill will give more importance for bringing our rank in the world level, sir. Today, sir, we are proud that our country caters the need of lakhs and lakhs of students, not only in India, but around the world for higher education, sir. This particular bill, the Act declares Indian Institute of Management as institutes of national importance and regularizing their functioning, sir. Especially, sir, the bill designates the President of India as visitor of every institute covered by the Act. This is very respectable, not only for the country, sir, for students who are going to study from all over the world, sir. Appointment and removal of IIM directors, sir, merit, discipline, transparency is in the bill, no doubt, sir. At the same time, appointment of chairman, chairperson of the board and governors. For this, the bill amendment to provide the chairperson of the board will be nominated by the visitor is a proper gesture, sir. Dissolution of the board, I would like to ask the Honorable Minister, dissolution of the board is very important in that the visitor is not involved. There should not be any controversy in the dissolution of the board. If it comes to the knowledge of the visitor, then it may be respectable. Coordination forum, incorporation of institute, for all this, sir, this bill gives a proper answer, sir. To conclude, sir, the need of the top uncompromised education is the future for the well-being and growth of our next generation, sir. This bill, I am sure, will further enhance the position of IIMs in the global ranking table. Thank you, sir. धन्यवाद मासन साहब। माननीय श्री सकलदीप राजभर जी, माननीय श्री सकलदीप राजभर जी, अनुपस्थित श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I'll take only, I have 3 points to be brought to the notice of the Honorable Minister. Sir, I raised to support this bill, and it's a very good bill, and we appreciate the Honorable Minister for Education for bringing this good bill, sir. And the first point which I would like to bring to the notice of the Honorable Minister is reduced budgetary support for IIM, sir. Sir, in the past 7 years, 7 new IIMs have been added and created, taking the total count of IIMs in the country to 20 in number, sir. The bill seeks to convert
even the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai to IIM, which should be appreciated, sir. Sir, however, there is a obvious mismatch between the increase in number of IIMs and the decrease in the, on the contrary, decrease in the budgetary support to them. Sir, in 2020, 22-23, the budgetary estimate was initially initial budgetary estimate was 654 crores, while it was reduced subsequently in the revised estimate stage at 608 crores. Sir. Sir, in 2023-24, that is subsequent years, next year, the budgetary allocation for IIM stands at 300, which is half of the earlier years. Sir. Sir, which is less than half of the allocation for the previous financial year. Sir, I request the Honorable Minister to ensure that adequate budgetary support is given to all the 20 IIMs because number has reached the 20, sir. Sir, the next point which I would like to bring to the Honorable Minister's notice is vacancies in IIMs. Sir, in March 2023, the close to 500 posts remain vacant in all IIMs across the country. These vacancies are concerning given that the sanctioned strength of IIM stands at 1,500. Sir. Out of 1,500, if 500 posts are vacant, and we can imagine the situation and the situation of the students there in IIM, sir. Sir, it is more even concerning that 60% of the posts reserved for OBCs and SC faculty members in IIM remain vacant, and that the number is more than 80 in the case of posts reserved for STs. Sir. There is a need to ensure that IIMs are adequately staffed so as to maintain the highest standards of education, sir. In this regard, I would like to make one suggestion to the Honorable Minister. The point number 5 and sub-point of 5 of the statement of facts, which is enclosed along with the bill, sir, the statement of objects and reasons, amending section 29 of the Act relating to the committee, that is coordination form of institute. Because my colleague Amar Patnaik ji has raised this point also, sir. And in this regard, my suggestion would be to have a common recruitment board, and this this coordination forum of institute comprising of all the members of all 20 institutes can can undertake the exercise of recruiting the adequate number of professors for IIM, sir, for all IIMs and supervisory functions also, sir. And the last point which I would like to bring to the notice of Honorable Minister is domicile quota. The domicile quota which is there in all the law schools is not prevalent in IIMs. So I request the Honorable Minister to meet the local, to satisfy the local students, to ensure that there is a domicile quota be fixed in respect of the students residing in that area. So, thank you very much. धन्यवाद माननीय श्री अब्दुल वहाब, माननीय श्री अब्दुल वहाब अनुपस्थित, माननीय डॉक्टर एम थुम्बेदुराई. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to participate in the bill introduced by Honorable Education Minister. That is the amendment bill seeks to further amend the Indian Institute of Management Act 2017 and provides for upgrading the status of National Institute of Industrial Engineering of Bombay, and also the Indian Institute of Management Act 2000 annexed view to declare certain institutions like Ahmedabad and Calcutta as the standard of excellence, national excellence. Sir, welcomable suggestions, sir, welcomable movement has brought. Sir, you know that education is concurrent subject. It is also state subject and also central subject, because the central has every power to enact laws. There is no objection to that. At the same time, our members raise that an issue
especially just I already said, when you are establishing this kind of institutions, local students, that local state people must be given the admission process, that given importance. Purely merit if you go, the purpose of establishing serious institution, different places as other places, Bangalore, Lucknow, so many. Prime Minister ambition is to see that local people also benefited. That is his aim. Modi ji's aim is to see when we are spreading this kind of institutions, the local people has benefited by getting the admissions. That spirit has to be in the running of the institution. That is what I am requesting. Sir, regarding this excellence, the autonomy, whatever they said, whether some members raised the autonomy of the institution is taken away by introducing this. Sir, this is what is the autonomy, sir? Autonomy is when government is funding, a lot of funding is giving, those institutions accountable to the government also. That is parliament. We are the parliament or assembly, whichever we are giving, that accountability must be there. Because in the name of autonomous, they cannot misuse it. Why? The allocation as fund has gone to these institutions. But what is happening actually is these institutions are charging very high fees now. They are collecting high fees. That is why poor people are not able to join these institutions. Therefore, in that respect, that is why I support this Vajesh already what he said. The allocation must be given more and see that poor students also get admitted in that. Sir, regarding the excellency, you said, see, what is the excellency? I could not understand. The excellency, they are telling, even for some institutions are given, private institutions like VIT and the institution, another institution, so many institutions, excellency like that kind of experiment is coming. Sir, this is given some concept attracting a foreign collaboration. For that there's an institution allowed like that. But one dangerous thing is going on in that. Because our friend said that is Cambridge, Oxford, that maybe some institution may be good. But if you see the Western countries, especially Europe and USA and other people, the students' population is going down there. After +2, that is school education, they are not interested to go higher education. They are going to employment, going to distance education, like that they are going. That is the situation happening. In these circumstances, most of the institutions, due to population policy, because that marriage and population, sir, thank you very much, sir, lawyer, as you come over. This problem. What is the Western countries, what is happening here? Due to this population is going down. So marriage is not certain place taking place, even marriage divorce is taking place, even marriage, children are not there. The population of the European, USA countries is going down. Because those institutions, except a few institutions, those institutions have no students there. Where they are getting, our Asian people are going. According to the statistics, 8 lakh students of Indian students are going abroad, or USA, UK, Germany, Australia, these are countries. At the same time, we are attracting only 30,000, 40,000 students from Afghanistan, Nepal, like that they are coming. Therefore, the standard in the name of ranking, they said that going down is only to see some kind of vested interest of the Western countries to belittle our institutions, like going rank like that, showing those institutions are high, therefore they are taking our students, they are going there. This is some kind of conspiracy is there. Therefore, just I want to make it finishing that. Therefore, in the excellency, when you are telling it, these excellency institutions must collaborate, it help to other institutions of our Indian, various institutions, IMNs, management institutes, the course conducted many institutions in India. Therefore, the standard has to upgrade what these institutions, excellence institutions, helping that. If at all they are helping, you can give that standard. And you have to see that without this kind of sharing their knowledge on our experience to upgrade other institutions, there is no point of giving this kind of excellency. Certainly, this is my view, sir. Thank you very much. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Sir, the Indian Institute of Management Act 2017 itself was enacted with a view to declare certain institutes of management to be institutions of national importance
with a view to empower these institutions to attain standards of global experience in management, management research, and allied areas of knowledge. So in such a case, the present amendment bill intends to, number one, the very welcome proposal is the President of India shall be the visitor of every institute. Once the President of India is the visitor empowered to appoint one or more persons to review the work and progress of any institute. Sir, there is no clarity in this. The persons to be appointed, what is the eligibility criteria, and what are the standards to be taken into consideration is not defined in this particular bill. The another aspect is, the services of director may be terminated by the visitor in such manner as prescribed. Okay, whenever and under what circumstances director may be terminated, and what are the another things, and another the eminent persons to be nominated by the visitor as the chairpersons. Likewise, as far as the appointment of as a chairperson also, the eligibility criteria and qualifications are not being specified in this act. Coming to the other aspect, with regard to the amendment to section 939, the rules and bylaws of the National Institute of Indian Industrial Engineering, Mumbai enforces before the commencement of the so-and-so, shall continue to apply the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, will necessary modifications and adaptations so far as not inconsistent with the. Now, modifications and who are the competent to make legislation, and whether the rules are framed under this act, rule enabling power is empowered in this under the act amendment is not specified. The original act is not also clear in this aspect. So apart from that, the standards of the Indian Institute of Management, the faculty has to be improved, vacancies have to be filled up, quality of the standards have to be developed, and necessary number of strength, including the admissions with regard to the local students and also to be taken into consideration as far as this institute is concerned. Finally, sir, to amend the section 19 is relating to coordination forum of the institute. What are the functions of the coordination forum, the institute? How to distinguish the functions of the management with regard to the coordination forum of the institute, whether to achieve what subject and object of this amendment act, whether it will serve the purpose are also not clear. It has to be clarified in this. Thank you, sir. I welcome the bill and support it. Shri Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अमर पटनायक जी से लेके रविंद्र जी तक 7 सम्माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने इस बिल को आज चर्चा तथा पारित करने का अवसर भी दिया, उसके लिए आपको भी सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, ये 2-3 विषय आज की चर्चा की अवसर पे मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सभी ने इस विषय का कॉग्निजेंस भी लिया है, सबने उसको समर्थन भी किया है। हमारे देश में 60 दशक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो रचना बनी है, जिसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत 2017 में मोदी जी की सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, शिक्षा विभाग के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आईआईएम की कल्पना की गई थी, लेकिन एक एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिलने के कारण ये डिग्री अवार्डिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी उनके पास नहीं था। इसलिए वो नोमेनक्लेचर उस अच्छे पढ़ाई के उपरांत उसको पीजी डिप्लोमा कहा जाता था। इस प्रकार के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मूलतः 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की दर्जा देना और उसको एक्ट से सपोर्ट करने में वो डिग्री दे पाएंगे, इसलिए 2017 को लाया गया था। उसी में लगभग आज देश में विभिन्न समय से आगे जाते हुए 20 आईआईएम का निर्माण हुआ था। अभी आज आपकी अनुमति के उपरांत
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, ये 1963 से ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट काम कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक प्रकार से है। इनकी कोर कॉम्पिटेंसी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसकी टेक्नो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एक विश्व की अच्छे इंस्टीट्यूशन है। देश की सेक्टर के बहुत बड़े बड़े मूर्धन व्यक्तित्व तो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर आए हैं। और इंडस्ट्री को बहुत वास्तविक अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकिंग की कोई एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तो नीति मुंबई उसकी एक उदाहरण है। आज आपकी अनुमति के उपरांत भारत सरकार की जो ये पहल है, नीति भी IIM का एक कैटेगरी में आ जाएगा और हमारी सरकार मुंबई को भारत की अर्थनैतिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में आज से, जब आपकी अनुमति के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति जी का मोहर लग जाएगा, तब हमें एक सौभाग्य मिलेगा, अवसर मिलेगा, मुंबई में भी एक IIM है ऐसे कहने का। और फिर आप शीघ्र ही आप जाएंगे वहां की कन्वोकेशन में, और आपने अनुमति दिया तो कन्वोकेशन में भी आपको बुलाएंगे, निश्चित रूप में आपका मार्गदर्शन को मिलेगा। अध्यक्ष जी, एक दूसरी पक्ष है, सभी ने उस विषय को भी रिकॉग्नाइज किया कि आफ्टर ऑल 2017 में तो एक एक्ट आया था, 6 साल हो गया, इसमें परिवर्तन क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सबने उसकी मेरिट के बारे में कहा, सबने अपना अध्ययन भी किया है, इसीलिए सबने उसको, इस परिवर्तन को, जो 3 चीजों में हम परिवर्तन का मोटा मोटी माइन्यूट में मैंने जाते हुए 3 चीजों में हमने एक अमेंडमेंट की प्रपोज किया है। उसमें एक, इसको हमारे देश में, जैसे अमर पटनायक जी ने कहा कि IIT भी उतनी ही बड़े ब्रांड है, IIM तो है ही, IIT भी उसकी इक्विवेलेंट, उससे बड़ा ब्रांड भी कहने से गलती नहीं होगी। IIT के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में NIT के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में स्टेम एजुकेशन बढ़ाने के लिए आइजर की कल्पना की गई है, 7 आइजर है, उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। 2017 IIM एक्ट थोड़ा उसे भिन्न था। ये सारे की प्रमुख विजिटर होते हैं। हमने इस अमेंडमेंट में प्रपोज किया है IIM का भी प्रमुख विजिटर होंगे, यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही होंगे। उनकी दूसरा अमेंडमेंट यह मांग रहे हैं कि पहले जैसे सभी मित्रों ने कहा कि इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए IIT में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उनपे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। थर्ड विषय एक उसमें हमने प्रपोज किया है, ये सारे को संचालन करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉडी रहेगा। कोऑर्डिनेशन बॉडी के मुख्य भी एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे, उसकी नियुक्ति सरकार नहीं करेंगे, विजिटर करेंगे, यानी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। सरकार पैनल भेज सकती है लेकिन विजिटर्स उसकी निर्णय करेंगे। ये मोटा मोटी एक हमने अमेंडमेंट लाया है। एक दो विषय शंका आई है, इसको थोड़ा मैं अगर आपकी अनुमति से उसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा, क्योंकि वो विषय कहीं ना कहीं वो थोड़ा इसकी पक्ष विपक्ष दोनों विषय चर्चा में आ रही है। मैंने जो हमारे मित्र आंध्र प्रदेश की मस्तन राव बीरा जी ने एक प्रश्न उठाया कि आपने समर्थन उन्होंने किया है, उनकी पार्टी के नेता विजय साई रेड्डी जी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, there is a very fundamental issue why you are getting into the autonomy area of institution. I think other
member has enlightened that in their speeches, but I would like to clarify that. In other hand, he also raised question why weaker section students are not getting admitted to IIMs. It's a good question. Why the faculty member are not fulfilled to the desirable category? Vijay Sai ji also mentioned that. I agree with that. ये कैसे होगा? दो चीज इकट्ठा नहीं होगा. हम इतना ही मांगते हैं. हम IIM की कोर्स कैरिकुलम क्या होगा? किस प्रकार के लोग उनको पढ़ाने के लिए आएंगे? यह सरकार की विषय नहीं हो सकती है. यह उस डायरेक्टर, उसकी एकेडमिक काउंसिल, उसकी टीम की विषय होगा. लेकिन जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने, जैसे हमारी देश में संवैधानिक व्यवस्था में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये सारे एक एग्जिस्टिंग एक्ट है, रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस. ये IIM में लागू होगा कि नहीं होगा? अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो पूछा जाएगा. सर नहीं रहेगा तो हम पूछेंगे किसको? वो कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं, हम ऑटोनोमस है. हमारे मानना है कि ऑटोनोमी आपको दिया गया है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए. गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी आपको तो रखना ही पड़ेगा. आपने प्रश्न पूछा कि भाई आपकी वैकेंसी इतनी है. ये कई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है. मैं आपको एक आज आपने अवसर दिया, मैं थोड़ा आज पूरा सदन रहता तो एक महत्वपूर्ण बात पे अच्छा चर्चा हो जाता, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड आपकी उपस्थिति में स्टेट करना चाहता हूं. जो लोग कभी सामाजिक न्याय की बात कहते थे, संविधान में कई बार लोग बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम लेते रहते हैं, रटते हैं. हमें कभी उनको याद करना, दिलवाना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC, ST, OBC और बाद में मोदी जी के द्वारा लाया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आरक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 2019 तक लागू नहीं था. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कल्पना किया, उस ऐतिहासिक गलती को सुधारा और एक आंक लाया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019. उसके बाद आज रोस्टर मेंटेन हो रहा. पहले था दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया. कोई सामाजिक न्याय का पूरा करने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सपोर्टेड व्यवस्था नहीं थी. नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको व्यवस्था लाया. ये एक्ट भी आने वाले दिनों में सारे इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा. IIT में लागू होना शुरू हो गया है, NIT में लागू हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है. कुछ राज्य वाले नहीं करते हैं, वो अलग बात है. यहाँ समर्थन करें तो ज्यादा नहीं बोलूंगा. कुछ राज्य लोग सामाजिक न्याय को मानते नहीं है, वो कभी अलग बात करेंगे. लेकिन सर, जो विजय साई जी चिंता किए वो वाजिब है. ये एक्ट, विजय साई जी, दिस enactment, this amendment will strengthen constitutional position through parliament to ask, you can ask question, why you are not adhering the Central Educational Institutions Reservation in Teachers Cadre Act 2019. Now they will be answerable. Previously, they were not answerable. That was the reality. So this act is, अब 6 साल के बाद कई जो अनुभव आया, 6 साल के अंदर थोड़ा गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को, पार्लियामेंट्री आंसरेबिलिटी को थोड़ा हनन हुई, इसीलिए ये अमेंडमेंट को लाया गया. फंडिंग की बात सभी ने कहा है. जो IIM की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार की लगभग 6,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अभी तक है. अभी आज भी जो व्यवस्था बनी है, हिफा की लोन कोई IIM, विशेष करके ग्रीनफील्ड IIM लेना चाहेगा उसको आज भी उपलब्ध है. वायबिलिटी गैप फंड की एक व्यवस्था IIM की अंदर है, उसको जिसको जितना ड्यू था सबको सरकार ने दिया है. और IIM अपना कोर्स फीस बनाए, अपना डिपार्टमेंट, अपना फीस स्ट्रक्चर बनाए, अपना रेवेन्यू जनरेशन करे, क्योंकि IIM तो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपना रेवेन्यू भी जनरेट करता है. बहुत IIM अच्छा कर रहे हैं. सरकार उनको जो टाइमली मदद करना नया IIM को कर रहा है, आगे भी करते रहेगा. फंड की कोई इश्यू नहीं है. हमारे देश में IIM की एक विश्वसनीयता, एक ब्रांड आज दुनिया में, अध्यक्ष महोदय,
Commission bill is coming. This will herald a new transformation in the area of dental health for 1.4 billion people. And it truly is being the time and necessary. Since I've got only 3 or 4 minutes and I have another speaker, I'll be quick. Honorable Vice Chairperson, ma'am, I'd like to come to the composition of the commission on clause 4 of this bill, which talks about having a chairperson, 8 ex officio members and 24 part-time members. I have a specific suggestion for the Honorable Minister that while the central government has included the Director General Dental Services as a member of the Dental Advisory Council, it is necessary to include the Director General Dental Services as an ex officio member of the National Dental Commission as well. I hope the Honorable Minister will take it kindly and will hope to include him also